इट ब्रेक्स डाउन द एंटायर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या करते हैं, यू बेसिकली एड मोर सराउंडिंग, जो कॉलम है उसको रिंग सपोर्ट जो है उसको रीइंफोर्स करते, यू एड मोर थिंग्स, दैट इज व्हाई यू सराउंड द कॉलम विद जैकेट ऑफ स्टील प्लेट्स formed and welded into six, so steel plates लेके you add it। और जो ये let's say for example ये आपका कॉलम है और आपने यहाँ पे एक स्टील प्लेट का रिंग टोटली बनाया, आई एम जस्ट ड्राइंग सेक्शन। ये जो गैप है, ओके, यू इन लाइक यू फिल इट विद कंक्रीट, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ग्राउटिंग। ये जो ग्राउटिंग है आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जो टाइल्स बनाते हैं टाइल्स के बीच में, नॉट टाइल्स बनाने के टाइम, वेल यू आर लेइंग डाउन द टाइल्स, ओके, यू ले देम डाउन, और जो बीच में जॉइंट्स है, ऑल ऑफ दिस व्हेन यू फिलिंग इट, दोज आर कॉल्ड ग्राउटिंग। ओके, so similarly you're filling with concrete here also, that's also called grouting। कभी कभी additional pilings can also be drawn next to the column base, okay, and concrete pads can link them to the pylon fabricated at or below ground level। Okay, so basic so we are seeing different types ना, तो पहले सॉफ्ट स्टोरी का फेलियर देखा था, फिर बीम कॉलम जो जॉइंट है वहां पे देखा था, फिर वुडन बिल्डिंग्स में shear फेलियर इन द फ्लोर देखा था। नाउ वी लुकिंग एट मल्टीपल पायर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन शैलो पिट्स, उसका क्या है, फिर रीइंफोर्स्ड कॉलम्स जो है उसके उसमें क्या होता है। I'm sorry, I mean, I didn't realize this was not done. Okay, I'll just explain you what these are. So, reinforced concrete wall burst में क्या होता है? Concrete walls, you usually use it, say, between an elevated road and a overpass structure, right? So you retain the soil also, and you also allow it to use the shortest span and yet transfer the weight directly to the नीचे जो soil present है. Okay. Now these walls are inadequate. Automatically जब stress है earthquake का, या जो earthquake का load है वो ground का motion जो है उससे ऑटोमेटिकली क्रम्बल हो सकता है। okay? So what do you do in these particular cases? Okay, so the walls that I'm talking about are, let's say, for you have a bridge, okay, so you have a elevated road and overpass जो है, you have this, यहाँ पे जो साइड में you have all of these concrete walls ना, तो वो soil को भी retain कर रहे, you're not letting soil, it's acting as a supportive। तो ये वाले concrete wall अगर burst हो गया तो क्या करना, तो ये वाले motion में क्या हो जाता है, it can crumble under the stress of the earthquake, right? So what do? You basically drill number of holes into the ground in this particular case, okay, along the entire wall, okay, and you secure L-shaped sections जो है आपको, जो आपने already देखा, reinforced bars के जो भी L-shaped sections है उसको इसमें ड्रिल करके ऐड करके, you also add some adhesive, जो epoxy adhesives मिलेगा, you add all of that, okay, and अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और भी बार्स चाहिए, यू एड ऑल ऑफ दैट आल्सो, ओके, एंड दिस कैन बी डन विद सम ऑफ फुटिंग्स, या अगर सपोर्टिंग चाहिए या और भी टाइट करना कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ प्रोन दैट पर्टिकुलर एरिया इज टू अ hazard। Okay? फिर ब्रिक वॉल रेसिन एंड ग्लास फाइबर रिइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है, ओके, सो ब्रिक बिल्डिंग्स जो है कभी कभी ग्लास फाइबर के कोटिंग्स के साथ रीइंफोर्स इट, ओके, समटाइम्स यू ऐड रेसिन, जैसे कि एपॉक्सी एडेसिव जो मैं बोल रही थी, या तो पॉलिस्टर की एपॉक्सी जो होती है उसके साथ दे रीइंफोर्स इट, ओके। नाउ these lower floors you can apply this over the entire exposed area, okay, whereas in the upper floors you can only add it in narrow areas near windows, door openings, etc। ओके, तो इसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, थोड़ा वॉल स्टिफ हो जाता है, एंड बेंडिंग अवे फ्रॉम द साइड, मतलब लेट्स से योर बिल्डिंग सपोज टू बी लाइक दिस, ये वॉल बेंड होने से रेस्ट्रिक्ट कर लेता है इफ यू हैव अ कोटिंग ऑन द आउटसाइड, मतलब यहाँ पे अगर कोट लगा दिया होता तो इट विल प्रिवेंट इट बिकॉज इट गिव्स यू एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द वॉल, ओके, एंड इफ एट ऑल यू नीड दिस फॉर द एंटायर बिल्डिंग, फिर बहुत एनालिसिस करके करना पड़ेगा, बट दिस इज अ कॉमन मेथड दैट यू डू। नेक्स्ट इज द लिफ्ट, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू नो alluvial soil में, okay, when you have like say a poorly constructed structure and जो बहुत firm सा जो material है उसके जो
वेव्स है, जो सीस्मिक वेव्स है, सीस्मिक मोशन है, उस पे जो वाइब्रेट होके अंदर जाएगा, इट विल बी एम्पलीफाइड इन एल्यूमिनियम लिफ्ट, राइट? ओके, सो क्या होगा, योर वर्टिकल एक्सेलरेशन विल बी ट्वाइस द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। ओके, तो कभी मतलब इट कैन गो अप टू ट्वाइस द फोर्स ऑफ योर ग्रेविटी, दैट्स द लॉजिक। कभी कभी मतलब दे सीन इट इन डिफरेंट केसेस। So if you have not secured your building to like a proper well embedded foundation, फिर building can be thrust from, मतलब नीचे से इट कैन बी पुश्ड अप, मतलब आपने ये बिल्डिंग है, आपने अगर इसको प्रॉपरली फाउंडेशन के साथ सिक्योर नहीं किया होगा, फिर ये बिल्डिंग, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के साथ ये बिल्डिंग कैन बी डिटैच्ड एंड थ्रोन अपवर्ड्स। ठीक है, वो थ्रस्ट मिल सकता है। ओके, सो फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपको वर्टिकल कनेक्शंस हर कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। ओके, सो यू शुड नॉट हैव एनी डिस्टर्बेंस, और जो engineered अर्थ है, से फाउंडेशन से वर्टिकल like components in everything, okay, हर चीज में you will have to have it nailed or specially hardened using some connections या some जैसे हमने L shaped clamps वगैरह देखा था, all of that will have to be done। तो लिफ्ट्स के भी वर्टिकल जो मोशन है वो बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो इसमें भी आप स्पेशल क्लैंप प्लेट्स ऐड कर सकते हो या एक्सपेंशन बोल्ट्स ऐड कर सकते हो, बट यू विल हैव टू basically tie all of your vertical elements together to the foundation in such a way that it is not thrown away as okay। And soil liquefaction, हमने जैसे मैंने शुरू में शायद बोला था, I think in one of your previous gate papers they had asked which particular phenomenon causes soil liquefaction। Okay, so soil liquefaction is basically it can happen when you have like a slope failure, it can happen in a landslide, it can happen in a flat area, but क्या होता है, it happens due to liquefaction of water saturated sand or mud। Okay, so okay, liquefaction is basic। Okay, so what happens is you have the soil, right? So particular soil जो है, due to say excessive पानी या due to some motion, your basic soil, if you have any structure on your soil, that will be impacted because वो हिल जाता है, it will not remain in its original form। Okay, तो let's say a landslide हुआ है या soil failure हुआ है, all of these, मतलब I understand ये seasonal factors है या तो wet season में होता है and all of that। ओके, बट क्या होता है, वाटर पर्कुलेट हो जाता है। okay? तो रन ऑफ फ्रॉम अ हायर एरिया हो सकता है या खुद ही वहां पे जो वाटर है उसको, मतलब लेट्स से यू हैव मड एंड यू हैव मड विथ वाटर, तो मड विथ वाटर थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है ना। सो व्हेन दैट हैपेंस, automatically what you need to do is you need to reduce the entry of water into it, okay, because you've designed for the normal loose soil, right? In this particular case, your what you need to do in this case is stabilization। Okay, so how do you do it? You basically you let this water, you don't let the water enter is your first thing। अगर water आता ही है, फिर channels या pipes बना के उसको drain करते, you need to let it get entered into the soil through some other place where your structure is not located। Okay, that is your best solution for this particular thing। Okay, फिर आपका जो लास्ट है, लिस्ट रिस्क फ्रॉम utility, okay, not pipers, sorry, pipes and cables, okay, utility pipes and cables है। Okay, so utility pipes and cables मतलब you have say gas, natural gas, okay, and ऐसे वाले particular scenarios में, let's say gas, let's say electricity, cables में, pipes में सब आता रहेगा, right? तो जब during and after earthquakes जो है उस time पे it becomes very dangerous। okay, तो if at all your building वो फाउंडेशन से हट जाता है या तो गिर जाता है बिकॉज ऑफ वॉल कोलैप्स, उसमें क्या होता है, जो आयरन पाइप्स है उनके डक्टिलिटी ज्यादा होते हैं, राइट? तो वो भी थोड़ा, दे विल आल्सो ब्रेक, राइट? वेर एवर यू हैव लाइक अ वीकनेस और एनीथिंग, उसमें बगल में जो भी इग्निशन का सोर्सेस है दैट कैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट अ फायर और एक्सप्लोजन एंड एवरीथिंग। तो फ्लो ऑफ गैस जो है उसको रिफ्रेन, मतलब रिस्ट्रेन करना, दैट्स द बेसिक थिंग दैट यू शुड बी लुक एट। सो व्हाट डू यू डू, यू बेसिकली डाउनस्ट्रीम द गैस मीटर। तो क्या कर सकते हो, दो मेथड्स है। एक है, एक मेटल बॉल के साथ यू यू हैव टू अरेंज इट एट द एज। ओके, तो सीस्मिक शॉक
पे क्या होता है, द बॉल विल रोल इन टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड इट विल सील, मतलब एक सिमिलर टू अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तो एक सॉकेट रहना चाहिए। ओके, वहां पे दूसरे एंड में देयर शुड बी अ बॉल, व्हेन देयर इज अ सीस्मिक शॉक, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ वो बॉल रोल होके वो जॉइंट पे जाके बैठ जाएगा, so it will lock the gas flow. Okay, the other is to have like a digital meter or a flow sensitive device. Okay, अगर वो पर्टिकुलर फ्लो ऑफ गैस एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। ओके, तो वैसे बोथ ऑफ दिस कैन बी डन। द नेक्स्ट इज अ टनल रेट्रोफिट। टनल रेट्रोफिट में क्या होता है, जो पूरा स्लोप है, okay, जो पूरा एंटायर टनल जो है, उसको वायर मेश के साथ आप कवर कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू पिन इट डाउन टू द स्लोप विद मेटल रॉड्स। ओके, इसका कॉमन मॉडिफिकेशन, मतलब इट्स अ कॉमन मॉडिफिकेशन हाईवे कट्स wherever you have these appropriate conditions. ब्रिज रेट्रोफिट में एक्सपेंशन रॉकर्स आपने देखा होगा, दिस इज अ वेरी मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ समथिंग हैपनिंग। सो यूजुअली क्या होता है, शॉर्ट ब्रिजेस में एक एंड पे एंकर्ड होती है, दूसरे एंड पे रॉकर्स होती है। तो रॉकर्स जो है वो वर्टिकल और ट्रांसवर्स सपोर्ट देता है, मतलब जो परपेंडिकुलर सपोर्ट जो मिलना चाहिए जब भी टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है एक्सपैंडर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके लिए देता है। ओके, सो जो लेंथ ऑफ दिस दिस इज योर वर्टिकल चीजें जो है, फॉर लेंथ ऑफ द स्पैन जो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो रहा है, दिस इज वेयर यू हैव एक्सपेंशन जॉइंट्स। आपने वॉल्स में भी देखा होगा, आपने कंक्रीट जहां पे भी है, you might have seen this on roads also, you have such gaps all when you're riding. Okay, ये जो गैप है वो कोम की तरह, मतलब एक एक्सपेंशन जॉइंट पूरा इट विल रन अलोंग द एंटायर लेंथ। उसमें जो भी टेम्परेचर की वजह से ऊपर नीचे जा रहे हैं या वाइडन होके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑल ऑफ दैट गेट अकोमोडेटेड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन जॉइंट्स। अगर एक्सपेंशन जॉइंट नहीं होती है तो ओवर टाइम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट like this concrete on this side will interact here, this concrete will start exerting pressure here, और यहाँ पे cracks आने लग जाएंगे if you do not have these expansion joints. Okay, so the next is your deck rigidity. ओके, सो सस्पेंशन ब्रिजेस उनका साइड टू साइड मोशन हो जाता है, राइट? तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो डिजाइन यूजुअली क्या होता है, सस्पेंशन ब्रिजेस में थोड़ा हिलने के लिए जगह देखे ही दे डिजाइन है, बट कभी कभी उससे ज्यादा जब हो जाता है वो रोड सर्फेस को तोड़ देता है, फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। सो उसमें बेयरिंग्स को इश्यू आ जाती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेट हो जाता है, फिर कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, सब हो जाता है। सो इस जगह पे हाइड्रोलिक डैम्पर्स जो है, या तो स्लाइडिंग कनेक्शंस जो है, या तो डायगोनल रीइंफोर्समेंट्स जो है वो यूज करेंगे, सो दैट your kinetic energy is converted into heat in this particular one. Your clamped sliding connections will give you a horizontal passageway, जैसे हमने पहले देखा था। Okay, so now in these failure and solutions वाला section, we're looking at specific failures, we're looking at specific solutions for those failures जो हमने पहले देखा था। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी हमने स्टार्टिंग में देख रहे थे उस सबका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सो नाउ इफ इट ऑल योर क्वेश्चन is something to do with, okay, your particular case में what would be a good solution. Okay, so in that particular case you should be able to point out कि हाँ hydraulic dampers will help, या sliding connections will help, या diagonal reinforcements will help. Now you know three methods. हो सकता है deck rigidity के लिए एक और ऑप्शन देखे, which of these are not a methods पूछ सकते हैं, because this is the kind of question that you should be expecting from this section. फिर लैटिस गर्डर्स, बीम्स एंड टाइज जो भी है। ओके, सो लैटिस गर्डर्स में दो आई बीम्स होते हैं, उसमें एक क्रिस क्रॉस लैटिस भी होता है, फ्लैट स्ट्रैप की तरह या तो एंगल स्टॉक की तरह। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज you can replace the open lattice with plate members and replace the hot rivets with bolts. That's your basic lattice girders, beams and ties का जो replacement है और strengthening है वो है। Now rivets क्या है? Rivets, okay. So traditional rivets में you can burn it out with an oxygen torch and replace with a locator bolt. Okay, so locator bolts are usually made of a high strength alloy and is heat treated. Okay, and so plastic shear failure typical of hot rivets, not the brittle fracture of ordinary bolts. ये दोनों नहीं होगा if you replace it with a locator bolt. So hot rivets are easily replaceable. It's not मतलब I don't know if you've seen a hot rivet. It would be मतलब एक second. You might have seen it in movies. So ऐसे ऐसे शेप में होता है।
ओके, हॉट रिवेट्स क्या होता है, यू बेसिकली एड हीट टू एड दीज इनटू से मतलब यू सी इन रेलवे ट्रैक्स में एक बड़ा सा यू हैव लाइक अ सेमी सर्कल जॉइंट, मतलब इट लुक्स लाइक अ स्क्रू फ्रॉम द आउटसाइड, यू विल बी एबल टू सी ओनली दिस सेमी सर्कल का पार्ट है। ओके, तो यूजुअली उसको 50 to 70% हीट देके ही यू एड इट, मतलब इट विल नॉट बी you'll not be able to screw it in just like a normal screw or something. You'll have to do additional heating. That's why they call hot removals. Okay, and जैसे ही वो cool होता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा shrink करके वो clamp पकड़ लेता है. So now the reason that we need to look at hot rivets is because during any hazard, वो movement की वजह से heat भी होता है. So when you have heat, automatically hot rivets start coming out of its own place. तो पूरा निकाल के लोकेटर बोल्ट से रिप्लेस करना इज अ गुड सॉल्यूशन. तो आई थिंक वी डन. मैम ये रेलवे इसमें यूज होता है क्या ज्यादातर? हाँ, यस यस, रेलवेज का यूज रेल्स होता है. में? ओके, आई थिंक वी आर डन. वन सेकंड, हाँ, वी आर डन. ओके, सो टुडेज क्लास फिनिश्ड लिटिल अर्ली. हम ओके, अभी हमने फेलियर्स वगैरह का ऑप्शन सब देख लिया है. अगले क्लास में मैं आई जस्ट चेक ऑन दिस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का पार्ट. If at all I have to take it, then I'll take it. Varna, I'll speak to Sanover. I think she's slightly busy with कुछ exams and all of that. फिर we'll speak and then decide on this particular component. अगर मेरे को लेना है तो अगली क्लास में ये दोनों खत्म कर लेंगे. और else temporary structures for rehabilitation से शुरू करके अगले सैटरडे. ओके, सो हियर ऑन हमारी जो सब्जेक्ट क्लासेस है वो सैटरडे को ले लेंगे, क्योंकि आई एम रीचिंग थोड़ा फाइनल स्टेजेस इन माय प्रोजेक्ट काम पे भी. तो ऐसे थर्सडे फ्राइडे को जल्दी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो सैटरडेज पे सब्जेक्ट क्लासेस आर बेटर. थर्सडेज को आई टेक योर एप्टीट्यूड क्लास 1 घंटे के लिए फ्रॉम नाउ ऑन. ठीक है, तो अगले क्लास में टेम्परेरी ओके मैम। स्ट्रक्चर्स का रिहेबिलिटेशन पक्का मैं ले लूंगी. एंड आई विल टेल यू इफ आई एम टेकिंग हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्लासेस नेक्स्ट सैटरडे होगा. ओके मैम, मैम प्लीज इसका नोट डाल देना आप इसमें यस व्हाट्सएप यस, ग्रुप पे। ठीक है. आप मतलब यू आर एक्सेसिंग द वेबसाइट ऑल्सो, राइट? हाँ मैम। ठीक है, तो वेबसाइट पे वैसे भी आ जाएगा. मैं आई ऐड द पीपीटी एंड आई सेंड इट अक्रॉस नोट्स. ओके मैम, चलो। चलो, ओके, थैंक यू सो मच. विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे. थैंक यू मैम। बाय।